Yes, student, after doing that match the following and word fill in the blanks, now we will do grammar portion of this lesson, that is preposition. Here we can see that few things are placed and it is asked that where are the things placed, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है. That is page number 10 of MCB. This we are doing page number 10 of MCB. This is the question in MCB, page number 10 and question number E. This belongs to grammar portion and now we will do this question in the book only. Now we see the picture. There is a bed in the picture, pillow in the picture, ball is there, chair is there, table is there, then TV is there, then there is a vase, there are flower pot and vase is there, there are lampshades are there, there is a cat in the basket and there is a girl, window is open and there is a picture on the wall. Now few blanks are asked that where are the things placed. Now options are also given in, on, under, between, behind, in front of and near. हमें यही word use करने हैं to fill these blank. Now we will start the question. There is a picture dash the wall. There is a picture on the wall. The picture is hanging on the wall. So the word on will be used in this blank. So we will use on. There is a picture on the wall. The television is dash the bed. Television is near the bed. बेड के पास रखा हुआ है. The table is, there is a table dash two chair. दो चेयर्स के बीच में एक टेबल है. आप देखेंगे पिक्चर में कि देर आर टू चेयर्स एंड अ चेयर टेबल इज केप्ट बिटवीन द चेयर. सो द वर्ड बिटवीन इज यूज्ड फॉर दैट. देयर इज अ टेबल बिटवीन टू चेयर्स. अ रेड बॉल इज, एक रेड बॉल रखी है. आप पिक्चर देखिए, यू कैन सी दैट रेड बॉल, दैट इज अंडर द चेयर. वो चेयर के नीचे रखी है. द रेड बॉल इज अंडर द चेयर. ये रेड बॉल चेयर के नीचे रखी है. देयर इज अ फ्लावर पॉट. यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन सी द टेलीविजन एंड यू कैन सी देयर इज अ वॉश बिहाइंड द टेलीविजन. आप देखेंगे कि टीवी के पीछे एक वॉश रखा है. सो यू विल राइट बिहाइंड वर्ड. देयर इज, the television is near the bed. There is a table between the two. Red ball is under. There is a flower pot behind the television. There is a flower pot behind the television. television के पीछे रखा हुआ है. A kitten is sleeping. एक कैट का बेबी जो है kitten is sleeping in the basket. basket के अंदर सोया हुआ है वो बस. So the word in is used for अंदर. Okay. The girl is standing dash the window. The girl is standing in front of window. window के सामने खड़ी है. The girl is standing in front of window. girl किसके सामने खड़ी है? window के सामने खड़ी है. Now there is a writing portion that is Renu goes to circus with her family. Student, we will not do this work now. अभी हम ये काम वर्क क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे. We will move to the next question, that is pronunciation and spelling. We have one word is there and we have made few more new words from that word. हमें एक word दिया गया है, उसमें से ही हमें नए वर्ड फाइंड आउट करने हैं. हम अल्फ़ाबेट्स की प्लेसिंग इधर से उधर कर कर हम उनसे न्यू वर्ड मेक करते हैं. सो द वर्ड इज रिंग मास्टर. The word is ring master, and now we have to find out more few word from the ring master. So there is the word ring, then can be star, then can be great, then master, then the word wearing. The word wearing. In the wearing, wear is there, ring is there, ear is there, then war, it can be made war, then earring. So you can find out so many new word from this. Then somewhere is given, then word another is also given. Then is the question is given, listen to your teacher and read out the word given in the box below. आपको मेरे साथ you have to speak these words.
यू नीड टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड, नॉट मोर देन दिस. इसके अंदर हमें और कुछ नहीं करना. वी नीड टू फाइंड आउट और वी नीड टू रीड दीज वर्ड. हमें ये वर्ड रीड करके देखने हैं कि हाउ दीज वर्ड कैन बी स्पेल्ड और हाउ दीज वर्ड कैन बी स्पीक्स. देन फर्स्ट वर्ड इज whip. WHIP. The word is whip. Next word is which. WHICH. The word is which. Then when. 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 Then whistle. WHISTL. Whistle. Then want. 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 Then wear. 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 Then walk. 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 Then wait. 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 Then scared. SCARET. Scared. Then school. 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 Then scold. 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 Then skin. SKIN. That is skin. Then circus. CIRCUS. That is circus. Then circle. 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 Then cycle. 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 Then selfish. SELFISH. That is selfish. Then ring. 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 Then wrong. WRONG. That is wrong. Then right. 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 Then ruffle. 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 Student, these words you can learn the spelling, you can read them again and again so that you can able to read these words wherever you find at another place. सिर्फ इस बुक के अंदर ही नहीं, अगर ये वर्ड आपको कहीं न्यूज़पेपर में या किसी और बुक में जब अगर आपको रीड करने के लिए मिले तो यू कैन ईजिली रीड दीज वर्ड्स. वंस अगेन वी विल रिपीट दीज वर्ड. विप, विच, व्हेन, whistle, want, wear, walk and wait. The next word is scared, then school, then scold, then skin, then circus, then circle, then cycle, selfish, ring, wrong, right and ruffle. So these are the words which you need to speak again and again. These words can be asked for dictation. इन वर्ड की डिक्टेशन भी ली जा सकती है. इन वर्ड्स को आपको किसी भी फिल इन द ब्लैंक में फिल करने के लिए भी दिया जा सकता है. तो आई होप यू नो द spelling of these words. And one more thing I just want to tell the meaning of these words. Whip, you know, a long leather cord. Which means to say कौन सा. Then when means to say कब. When do you go to school? आप स्कूल कब जाते हैं. Whistle to means to say सीटी बजाना, whistling करना. ठीक है. Want, what do you want, आप क्या चाहते हैं. Wear the clothes, कपड़े पहनो. Walk means to say चलना. Then wait, you stay there and wait for your brother. आप यहाँ रुको और अपने भाई का इंतज़ार करो. The word wait means इंतज़ार करना. Scared, I told you, डरा हुआ. School, the place where we go to study, एक जगह जहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं. Scold means to say डांटना. Skin means to say the body, the covering part of our body. Circus is the place where animals and clowns are there. They make us happy. They present some trick to make us laugh. Circle mean to say गोला, गोल बनाते हैं जो हम. Cycle, you know that riding a cycle there are two wheels and you ride cycles. आप सबके पास होंगी cycles. Selfish, the person who thinks about themselves, they never thinks about other. Then ring मतलब फिंगर की रिंग ये होती है. रिंग गोल भी होता है और रिंग ये फिंगर वाली रिंग भी होती है. देन रॉन्ग मीन्स टू से गलत. इसका मतलब जो चीज़ सही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग मीन्स टू से नॉट करेक्ट.
देन राइट विच इज़ राइट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज रॉन्ग मीन नॉट करेक्ट एंड राइट मीन्स येस इट इज़ करेक्ट। तो करेक्ट जो चीज़ है वो राइट है। राइट करेक्ट भी होता है, राइट इज़ ऑल्सो डायरेक्शन, एक राइट एंड लेफ्ट वाली डायरेक्शन भी होती है। देन रफल, रफल मीन्स टू से चिढ़ाना, किसी को भी टीज करना, दैट इज़ रफल। So student, these words we have done in this class. Later on in next class we will do the listening skills and the other part of this lesson. Student, we will again read this lesson. We will do whatever I taught you in the class. We will read it at least twice and we will try to speak all the words which we have read today in this class. So we will do next lesson in our next class. Till that time, bye bye.